और लग के कर दिखाने में, मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी, और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में कि अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन की कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है, वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी कि एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और 7वें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ, मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ, मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा है। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया। Good afternoon, everyone. Thank you for joining us on this webinar of Business Opportunity Over Chai. Business Opportunity Over Chai presented by the management of Franchise India with an aim to introduce you with new business opportunity every day at 12 o'clock. Today also we do have a great business opportunity for all of you. But before we'll start discussing the brand, let me just quickly run you through with the Q&A process. If you have any questions during the webinar, I would request you to please type your question and leave into the Q&A box. We see some of you raising your hand. I would request instead of raising your hand, just mention your interest of city along with your question and queries into the Q&A box. We will answer all your questions live in this webinar today, post our presentation. So our today's brand is Feeling Minds. They are providing or inviting franchisee for psychologists, healthcare practitioners, and existing therapy centers. They are recognized under the Ministry of Corporate Affairs, Government of India. We do have the founder, Dr. Chinu Kishore Agarwal, here on this panel today to let you know a bit about the brand, and then Amisha, who's going to give you a proper brief about brief and understanding about the franchisee opportunity they have to share. We have Ms. Neha also from the brand side. So I would like to welcome all the panelists who have joined us here today from the brand. And I am so excited because it is a different kind of opportunity altogether, franchisee opportunity. We keep talking about the retail sector, the food sector, and other industries, but this industry is something which we hardly get chance to explain and talk about, especially into the franchisee. So we are very excited, and I'm sure the people who are watching you live, I can see the people are still joining in. So I'm sure that everybody who's joining in and who's already here on the webinar right now, they would want to know more about what exactly you are doing and what is the opportunity you have in terms of sharing into franchising into the Indian market. So I would request you to, Dr. Chinu, if you can just take the lead and give us an understanding about the work which Feeling Minds is doing and what exactly you have in franchising. Over to you, Dr. Chinu. Yeah, thank you so much, Neha, for such a great introduction. And I welcome you all. And thank you, Franchisee India, for giving us this platform to be present here. And I welcome all the potential investors as well to be here and supporting us in this journey. So before we start, I would like to introduce myself. I'm Amisha Vana. I'm a counseling psychologist, and I'm the program head of Student Development Initiative with Feeling Minds. So I would also like to give you a brief about Dr. Chinu Kishore Agrawal, who's the founder of Feeling Minds. And I'm really honored to be the spokesperson and presenting and telling you about our Feeling Minds brand. So I'll just share the screen. I hope it's visible.
Yeah, Yeah, thank it's you. okay. So, talking about Dr. Chinu Agrawal ma'am, she is the director of Feeling Minds, an organization which is dedicated to bring psychology to everyone. She is also director of Adolescents Mental Health Fields Global Foundation USA, which is working in creating emotional wellness programs to be implemented in schools both in USA and India. She has been fondly known as Monkey Doctor by thousands of her satisfied clients and students whose life she has impacted and transformed by her extensive work. She has been recently invited as a keynote speaker to speak on school mental health at the University of Cambridge. She's passionate about imparting emotional education to every strata of the society with a mission to bring psychology to everyone. She's also a trustee of NGO HEMA Foundation, which is closely working in the field of value education. She's a renowned relationship expert and a TEDx speaker. And she's a passionate teacher of psychology and has trained more than 2,000 plus professionals in various psychological theories and therapies. So coming to her academic qualifications and credentials, because it is important to know that the world-class credibility that she brings with Feeling Minds. And she has been trained under renowned institutes and mentors both in India and abroad. So these are some of the qualifications that she holds. Then coming to the affiliations. So she has been affiliate partner of many international organizations, starting with American Psychological Association. She is internationally listed ACT therapist, professional international membership of the prestigious ACBS organization. She's also accredited by International Coaching Federation, Gottman licensed assessor, and many more. And she has done extensive work in the field of mental health, where we are imparting psychology and mental health awareness to everyone and varied age groups, whether it's children, students, mental health professionals, doctors, and many more. So, and these are some of the proud moments, and we have been received blessings of the Honorable President of India, Sri Ramnath Kovind, in the ceremony that happened in 2022. And she has been working extensively with many government institutions as well, like NCRT, CBSE, and ministries of education as well, where she is actively involved in decision making and policy making in the field of mental health. So this was about ma'am, and I would like to hand over to Dr. Chinu Agrawal ma'am to start with the presentation. Thank you so much, Amisha. Thank you so much, Neha, for introducing us. It's a great privilege today and a special moment for us to launch Feeling Minds as a franchisee opportunity. We have been pioneering in the world of mental health, and the story of Feeling Minds starts way back, though we formally formed a company in 2016. But before that, we had already started taking tiny steps in this field when we started working with schools and organizations, imparting emotional education to the children as well as to employees in various institutions. Friends, we all are very much aware, especially after the COVID pandemic, of the importance of mental health. एक समय था जब इंडिया में मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात करते थे, तो कोई कहता था कि हम कोई पागल थोड़ी ना है जो हमको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़े या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़े. Now people know that a psychologist works in both the areas to enhance well-being as well as to treat illness. And also, there is an acceptance कि जैसे ब्लड शुगर होता है या ब्लड प्रेशर होता है, वैसे ही डिप्रेशन, एंजाइटी किसी को भी हो सकता है. और जैसे फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम्स हम डॉक्टर के पास जाकर उसका ट्रीटमेंट लेते हैं, वैसे ही मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स के लिए हेल्प सीख करना कोई ऐसी बड़ी या खास बात नहीं. इट इज अ रूटीन थिंग. एंड जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में, अमीशा आपको अभी बता रही थी कि मेरी ज्यादातर पढ़ाई भारत के बाहर हुई, वहां पर विदेशों में मेंटल हेल्थ को लेकर स्टिग्मा बहुत पहले ही खत्म हो चुका था और लोग
अपने लिए पर्सनल कंसल्टेंट्स, कोचेस इनको हायर करने लगे थे। ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि भारत में भी अब इसकी अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस दोनों बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पर इसके साथ साथ एक जो प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ फील्ड में वो ये है कि हम अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड हैं और हमें ये नहीं पता कि अगर मैं उदास हूं या मुझे घबराहट हो रही है या मुझे किसी बात का बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है या मेरा रिलेशनशिप में कोई ब्रेकअप हुआ है, तो आखिर हमें किसके पास जाना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट का फर्क क्या होता है, कौन दवाई देता है, साइकोलॉजिस्ट आखिर करता क्या है, साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड थेरेपी क्या होती है, अभी भी लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। हीलर को और पता नहीं कौन से लोगों को साइकोलॉजिस्ट ही समझ लिया जाता है और उनके पास कंसल्टेशन के लिए लोग पहुंच जाते हैं। कुछ को रिलीफ मिल भी जाता है और कुछ को नहीं भी मिलता है। फीलिंग माइंड्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिवोल्यूशनरी तरीके से साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को इंडिया में एस्टैब्लिश किया। पिछले 8 सालों में हम 1 लाख से ऊपर लोगों तक पहुंचे अपनी इंडिविजुअल सर्विसेज द्वारा, ग्रुप थेरेपी द्वारा, और लाखों लोगों तक स्कूल्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, वेबिनार्स के द्वारा, वर्कशॉप्स के द्वारा, यूट्यूब सेशंस के द्वारा हमने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सही तरीके से फैलाने में बहुत बड़ा काम किया। अब हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां पर अगर कोई साइकोलॉजी का या मेंटल हेल्थ का नाम लेता है तो सबसे पहले फीलिंग माइंड्स उनके जहन में आता है। हमारे पास 200 से अधिक वेल ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट हैं। हम करियर काउंसलिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां पर 120 सर्टिफाइड करियर काउंसलर्स हमने तैयार किए जो करियर गाइडेंस, करियर काउंसलिंग और करियर इंफॉर्मेशन सब देने में माहिर है। फीलिंग माइंड्स ने अपना करियर काउंसलिंग का प्रोटोकॉल बनाया। साथ ही हम ऐसी पहली कंपनी है जिन्होंने पेरेंट कोचिंग या पेरेंटिंग के लिए ट्रेनिंग देना आरंभ किया और अब हमारे पूरे देश भर में, दुबई में, यूके में, हांगकांग में, सिंगापुर में जगह जगह ट्रेंड पेरेंटिंग एक्सपर्ट्स हैं जो वाकई में पेरेंटिंग एक्सपर्ट्स हैं, स्वयंभू नहीं है जिन्होंने एक रात को सोचा क्योंकि मैं 2 बच्चों की माँ हूं तो चलो मैं भी इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाती हूँ और लोगों को पेरेंटिंग की सलाह देती हूँ। फीलिंग माइंड्स ने पहली बार देश में रिलेशनशिप सर्टिफिकेशन कोर्स चलाया जो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड कोर्स है। 6 महीने का ये कोर्स है और हम ऑलरेडी इसके 4th बैच में आ चुके हैं जहां पर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग रिलेशनशिप काउंसलिंग, कपल काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग, सेक्सुअल वेलनेस एजुकेशन की दे रहे हैं। और जो लोग हमसे ट्रेनिंग लेते हैं वो फिर जाकर सोसाइटी में, कम्युनिटी में उसकी प्रैक्टिस करते हैं और लोगों का भला करते हैं। ऐसे में फीलिंग माइंड्स लेमन पब्लिक के लिए, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए एक गो टू प्लेस बन गई बहुत ही जल्दी। और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग, एंटरप्रेन्योर्स हमारी इस जर्नी में साथ आए, इसका लाभ उठाएं। मेंटल हेल्थ की फील्ड ऐसी है कि आप अगर केवल कुर्सी पे बैठे रहें और कुछ भी ना करें तो भी कुछ ही दिनों में आपकी 100x तक ग्रोथ हो जाएगी क्योंकि डिमांड और सप्लाई का रेशियो इतना स्क्यूड है। डिमांड इतनी ज्यादा है मेंटल हेल्थ की फील्ड में आज की तारीख में, पर सप्लाई बहुत ही कम है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट आज की तारीख में भी हमारे देश में जो एक्टिवली प्रैक्टिस कर रहे हैं 10,000 भी नहीं है, और जबकि 140 करोड़ की पॉपुलेशन को हमें केटर करना है। ऐसे में जो बहुत अच्छे टैलेंटेड साइकोलॉजिस्ट हैं वो इंडिया में रहते ही नहीं, यूएस चले जाते हैं, यूके चले जाते हैं। मैंने भी अपनी जर्नी में बहुत लोगों से सुना कि मैम आप यहाँ क्यों रह रही हैं, आपको तो अभी तक कहीं विदेश में सेटल हो जाना चाहिए था।
पर इस देश को भी तो मानसिक स्वास्थ्य की जरूरत है। इसलिए इस जर्नी में हम आपका स्वागत करते हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और आपका हैंड होल्ड करने के लिए तैयार हैं कि इस मेंटल हेल्थ फील्ड में आप अपना कंट्रीब्यूशन दें, इसको आगे ले जाएं। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप केवल अर्थोपार्जन नहीं करेंगे, आप केवल मनी अर्न नहीं करेंगे, आप उसके साथ सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट और एक दिली सुकून हासिल कर पाएंगे दूसरों की लाइफ में मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट करने का। मैं हमेशा से कहूंगी कि अगर हमारे पास समय हो तो जल्दी से हमने जो पीपीटी बनाई है उसको रन कर दें। नेहा, आप क्या कहती हैं, हमें रन करनी चाहिए? डू वी हैव? हाँ जी मैम, बिल्कुल श्योर। जी, हमेशा। तो मैं आपको पहले जल्दी से मेंटल हेल्थ की स्फीयर में जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनके बारे में बताती हूँ। देखिए जरा, हमारे यहाँ डिप्रेशन कितने लोगों को, 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 1/5 लोग डायग्नोस्ड हैं डिप्रेशन से। जो अनडायग्नोस्ड है अभी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। डीमोरलाइजेशन सिंड्रोम या उदासी रहना या नींद ना आना डिप्रेशन के कई एक सिम्टम्स में से कुछ सिम्टम्स तो मुझे लगता है कि सारी की सारी पॉपुलेशन को होगा, पर जो डायग्नोस्ड है वो 1/5। वी आर द डिप्रेशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्लीज। अब ये जो डिप्रेशन है ये केवल अडल्ट्स का प्रॉब्लम नहीं रह गया। अगर आप एनसीआरबी का डेटा उठाकर देखेंगे तो जो पिछले साल टोटल सुसाइड्स हुए उसमें से 20% सुसाइड्स बच्चों और एडोलेसेंट्स ने किया है। कितनी बड़ी बात है ये हमारे लिए। हम बच्चों को स्कूल्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स पढ़ाते रहे और पता चला ये बच्चा जिसको हम नाजों से पाल रहे हैं वो अंदर ही अंदर मानसिक रूप से ग्रस्त है, परेशान है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, गिव अप करने की भावना रख रहा है और एक दिन हमें पता भी नहीं चल रहा है और वो अपने आप को खत्म कर ले रहा है। सुसाइड रेट्स देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया है कि 15 से 29 साल की एज ग्रुप में हमारे यहाँ मैक्सिमम सुसाइड्स हो रहे हैं। ऐसे में अगर हम एंजाइटी को देखें, सोशल एंजाइटी को, तो 4 में से 1 हमारे यहाँ सोशल एंजाइटी से ग्रस्त है, जिसको एग्जाम फियर, स्टेज फियर, लोगों से बात करने का डर, अनेकों प्रकार के फोबियाज, जिनके लिए वो कभी किसी की मदद नहीं लेते, अपनी लाइफ को हैंडीकैप तरीके से चलाते रहते हैं। बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद, बहुत ज्यादा पोटेंशियल होने के बावजूद भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज अमीशा। सब्सटेंस अब्यूज। देखिए, निम्हांस की स्टडी कह रही है कि जो भी लोग हमारे यहाँ मेंटल इलनेस की ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं उनमें से 5 लोगों में से 1 को सब्सटेंस अब्यूज, किसी ना किसी नशीली पदार्थ की लत लग चुकी है। आपको ये पता ही नहीं होगा कि ये नशीले पदार्थ इनके हाथ में आते कहाँ से हैं, कैसे उपलब्ध होते हैं। और जो लोग इन नशे से निकलना भी चाहते हैं या जिनके परिवार इसमें से निकलना चाहते हैं उनके पास कोई उम्मीद की किरण भी नहीं है, क्योंकि जो नशे के डी एडिक्शन के लिए जो थेरेपीज हैं वो अमीशा, कैन यू प्लीज मैक्सिमाइज दिस स्लाइड और मे बी Neha Patil, you could run it. This is not the way to run the slides. It should be run in a slideshow. So ये जो सब्सटेंस अब्यूज है इसके लिए एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड थेरेपी होती है। ये हमारे आगे, आप लेमन को छोड़िए, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी नहीं पता। कितना बड़ा खजाना हम लेकर बैठे हैं लोगों के जीवन सुधारने का, लोगों के घर सुधारने का, पर हमें पता ही नहीं है कि ये किया कैसे जाता है। नेक्स्ट प्लीज अमीशा। वर्कप्लेस स्ट्रेस अभी हाल ही में एक सनसनीखेज केस हमारे सामने आया था जहां पर एक
बहुत ही हाई लेवल के एम्प्लॉय ने अपनी जान ले ली और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में ये लिखा कि आई एम गोइंग बिकॉज आई कैन नॉट हैंडल वर्क प्लेस स्ट्रेस। कितने ही लोग, मतलब 50% of the workforce is living under stress and depression, और एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम्स स्ट्रक्चर्ड तरीके से उपलब्ध नहीं है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इनको करवा भी रही है तो वो केवल एक आई वॉश के लिए कि हाँ भाई हमने साल में ये एक वर्कशॉप कराया था, ये एक वेबिनार कराया था। क्या उससे वाकई में हमारी वर्कफोर्स की मेंटल हेल्थ सुधरी या नहीं, इससे शायद ही किसी को कोई मतलब है। नेक्स्ट प्लीज। अब ये देखिए कि 10 में से 9 लोग, उनको ये पता ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ की ट्रीटमेंट के लिए जाना कहाँ है। अगर आंखों में तकलीफ है तो पता है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाना है, अगर हड्डी में तकलीफ है ऑर्थोपेडिशियन के पास जाना है, नाक में भी तकलीफ है तो ईएनटी के पास जाना है। सबको सब ऑर्गन का पता है, पर मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा। आज भी 90% लोगों को हमारे यहाँ जरूरत होते हुए भी ये ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। बहुत ही चिंताजनक बात है। नेक्स्ट। सो ये देखिए, ये चैलेंजेस हैं जो मैं अभी आपको बता रही थी। हमारे यहाँ रेगुलेशन नहीं है, बहुत सारी क्वैकरी है मेंटल हेल्थ की फील्ड में। आओ हम आपको ये सुंघा दें, आओ हम आपको ये करा दें, ऐसे ये कर रिलैक्सेशन करा दें, अमका डमका फलाना, और आप ठीक हो जाओगे। जो है भी क्वालिफाइड लोग, उनकी भी ट्रेनिंग एडिक्वेट नहीं है। ऐसे में जो रे ऑफ होप बनकर हमारे सामने उभरा है वो है फीलिंग माइंड्स। फीलिंग माइंड्स की परिकल्पना एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में टीम के रूप में कार्यरत रहते हुए जब मैं 25,000 स्टूडेंट्स से मिलती थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स में, वहां से शुरुआत हुई। जब मैंने देखा कि इन बच्चों को इमोशनल रेगुलेशन की स्किल्स सिखाने की बहुत जरूरत है, और वहां से जो ये शुरुआत हुई, कभी हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इतना सारा काम हमारे सामने आता ही चला गया। एक बार एक झलक देख लेते हैं। प्लीज रन द स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये 5 चीजों को आप देख रहे हैं, हम क्या क्या करते हैं। पहली बात तो हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सर्विसेज देते हैं। साइकोलॉजी के जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। जो लोग अपना डायग्नोसिस किए बिना ट्रीटमेंट लेते हैं उनमें, और जो डायग्नोसिस करवा के ट्रीटमेंट लेते हैं उनमें ट्रीटमेंट आउटकम्स में रिसर्च के द्वारा बहुत फर्क पाया गया। इमोशनल एजुकेशन प्रोग्राम्स हम पूरे देश में रन करते हैं, और साथ ही मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की एक्टिविटीज भी साथ साथ में चलाते हैं। अब हम आगे चल के देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलाइए प्लीज। इसको छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सर्विसेज, नेक्स्ट स्लाइड, को हम अगर डिवाइड करें तो हमें पता चलेगा कि एक तो हम उनके लिए सर्विसेज दे रहे हैं जिन्हें अभी कोई मानसिक बीमारी नहीं है, पर जो स्ट्रेस में है, परेशान है, और अगर अभी इनको इन बातों के लिए ट्रीटमेंट नहीं मिला या कोई काउंसलिंग सर्विसेज नहीं मिली तो ये बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो हम करते हैं वो है हमारा एक्सपीरियंशियल एजुकेशन, इमोशनल एजुकेशन प्रोग्राम, जो रिसर्च बेस्ड एविडेंस बेस्ड प्रोग्राम है, जिसकी हम इम्पैक्ट स्टडीज कर चुके हैं, जो हम 150 से भी ज्यादा स्कूल्स में ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। और ये प्रोग्राम हम अपनी फ्रेंचाइजीज को ऑफर कर रहे हैं विद ड्यू ट्रेनिंग। नेक्स्ट। साइकोलॉजिस्ट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हम फ्रेंचाइजेस के थ्रू ऑफर करेंगे। उसका कैसे सिस्टम रहेगा वो अभी अपने प्रेजेंटेशन में अशोक जी समझाएंगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट।
ये इसको लीजिए पीछे, आप आगे चलिए अमीषा, आगे चलिए, आगे की स्लाइड्स में हम बता देंगे। मेंटल वेलनेस की स्लाइड थी ना एक? हाँ, ये यही पीछे चलिए, प्रीवियस स्लाइड प्लीज रन द प्रीवियस स्लाइड, यस दिस वन। सो देखिए, ये जो हम फ्रेंचाइजी ऑफर कर रहे हैं, इसमें दो तरह की फ्रेंचाइजीज आपके लिए उपलब्ध होंगी। पहला, एक मेंटल हेल्थ क्लिनिक आप चला सकते हैं, जैसे कोई भी एक फिजिकल हेल्थ क्लिनिक चलाता है, उसी तरह से आप फीलिंग माइंड्स का मेंटल हेल्थ क्लिनिक रन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको टेक्निकली इक्विप करेंगे। कैसे आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को हायर करेंगे, कैसे आप पूरी एक टीम बनाएंगे, कैसे आप उस टीम के द्वारा मेंटल हेल्थ के लिए जो अप्रोप्रिएट असेसमेंट्स हैं, इंडिविजुअल थेरेपी है, ग्रुप थेरेपी है, उसको अपने क्लिनिक में रन करेंगे। इसी तरह से आप फीलिंग माइंड्स का वेलबींग सेंटर भी ले सकते हैं, जहां पर आप थेरेपी नहीं करेंगे, पर आप बहुत सारी इंडिविजुअल सेशंस देंगे रिलेशनशिप के से रिलेटेड, या पेरेंटिंग से रिलेटेड, या करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, जहां पर जो आपके पास सामने जो क्लाइंट है वो बीमार नहीं है, पर इन सर्विसेज को अगर वो अवेल नहीं करता है टाइम से, तो बीमार हो सकता है मानसिक रूप से। तो वेलबींग सेंटर भी चलाना बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जगह जगह। आप अगर इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, या आप इक्विप्ड हैं, या आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, तो आप दोनों भी सेंटर्स एक साथ भी चला सकते हैं। हमारे पास इतना वेल इक्विप्ड सारा सिस्टम है कि हम आपको दोनों के लिए भी एम्पावर कर सकते हैं, हैंड होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अभी अशोक जी आपको बता देंगे। मेंटल हेल्थ क्लिनिक के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इस प्रकार से हैं कि आप पेशेंट सेंटर्ड केयर डिलीवर कर सकें, आप साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड एविडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिसर्च बेस्ड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट, कोई अबरा कडाबरा नहीं, कोई जादू टोना नहीं, आप वाकई में जो साइकोलॉजी का ट्रीटमेंट है वो आप प्रोवाइड कर सकें, और मेंटल हेल्थ एजुकेशन और प्रिवेंशन को प्रमोट कर सकें। सिमिलरली वेलबींग का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो है नेक्स्ट। सो ये जो मेंटल हेल्थ क्लिनिक है, इसमें आप अडल्ट्स के लिए, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स के लिए, दोनों पॉपुलेशंस को केटर कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि हम एक ही पॉपुलेशन को केटर करना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट। वेलबींग सेंटर में हम, जैसे मैंने बताया, इमोशनल रेजिलियंस और इमोशनल एजुकेशन के लिए ज्यादा काम करेंगे। नेक्स्ट। वेलबींग सेंटर में बहुत सारी सर्विसेज हैं हमारी, इसको अगर आप थोड़ा जूम करके दिखा सकें। सेल्फ केयर, स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंडफुलनेस, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, ये देखिए इतनी सारी ये सर्विसेज, इनमें सब आप अपने टीम को ड्यू ट्रेनिंग करवा कर और फिर आप ये सारा ऑफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। नाउ वी वुड invite Ashok ji to take it forward, and we invite the questions as well. Thank you so much. Ashok sir, are you there? Uh, it seems Ashok ji, I think he's not there. So let me just, yeah, he's joined again. He's there. He's got some network issues, so he missed it, but he's back again. Neha- Ashok sir, I would request you to, if you Neha, can there just is a take the lead. question in the question answer box. Do you want me to take So, it up right now? or after? ma'am, we will take up the questions. Let the commercials also be covered, because it will Sure. take hardly 10 minutes, and then we'll take up the questions from Q&A Sure. box. Meanwhile, guys, I would request, I can see some of you raising your hands. Again, I would want to request you to please leave your questions into the Q&A box. We'll answer all your questions post this presentation. We only have left with the commercials, which Mr. Ashok is going to explain you, and then we are going to take up the question and answer live here. Over to you, Ashok ji.
Yeah, so thank you, Dr. Chinu and the entire team to present this wonderful opportunity. And we see there's a huge market gap, and basically there are not any prominent players in this market segment who can basically resolve this issue, and basically provide a solution for that kind of the challenges that India is facing. I think Dr. Chinu that she has mentioned, because she is in the business and she has traveled all over the world, and she defines like India is the stress capital of the world. It's very alarming. It's very worried conditions, right? I think through her experience and her knowledge and the systems that she has created, I think we can take this solution. We can serve this to the maximum population of India, you know and so that's so where basically we need franchisee partners to take our services and deliver to the end uh, consumers, or to the population at large, right? So we need basically helping hand and franchisee partners who can take our services to individuals, right? And then basically, so the society is benefited, individuals are benefited, our franchisee partners are benefited. And this is not a business that you look for, profits and only pure commercials. It's a basically the money is the secondary in this business. The primary concern is the how to basically we can bring better services to the individuals, to the population, and money will come, right? That's not an issue, right? So, and this is a very sustainable business model, and we need franchisee partners pan India. So we are not limited to any specific geography or city. We are open for pan India. We can start this business at any location of the country. So I'll give you just a quick brief in terms of like what kind of franchisee proposal that we have for the franchisee partners. Right. So just I'll share my screen. Yeah. Okay. So this is the quick summary of the proposal or the offering for our franchisee partners. For franchisee partners, we are looking for two kinds of invest mindset or investor categories. Ashok sir, the screen is not yet come. I think it's coming, but it's not yet come. Okay. If I stop my video, it may give some better bandwidth. Yeah. Is it visible now? Yeah, it's visible now. Yes, it is. Yes. Okay. But there is a lag from my end in terms of the screen and visuals. Okay. So no problem. So two different mindset, two categories of investors. One, basically the franchisee partners who are going to set up a psychology clinic, and second partner basically who is going to set up a wellness center. Okay. So the difference between two in the psychology clinic and wellness center, in wellness centers we have a more range of services. We also conduct workshops, plus we provide therapies in the wellness center. So that is the only difference. So you have an extensive services where you have basically the slightly better revenue streams.
If you look at my total investment in initial startup or initial setup is going to be 17 lakh rupees for a psychology clinic and 23 lakh rupees for a wellness center. If you look at the franchisee fee, so again, this franchisee fee of 3 lakh rupees is again defines that the priority for Dr. Chinu is not to make money. This is a social service, right? So he wants to the society or the investor to be benefited. And against this 3 lakh rupees of franchisee fee, the support that you are going to get from Dr. Chinu and her team is going to be phenomenal. That even this 3 lakh rupees doesn't recover her efforts and team efforts to recover their initial cost of efforts, right? So this is just only to basically just cover basic cost, and then basically the intensive cost that Dr. Chinu she has already taken care of it. And if you look at the returns on investment, so these are almost 100% in all both formats, right? So that gives you like a return on investment. You look at your payback period is around 20 months. So you will recover your 20 lakh rupees in a psychology clinic within 20 to 22 months. And for a wellness center, you recover your investment within 18 months because you have a better revenue streams. The contract period is 5 years, and after 5 years, the contract is going to be renewed based on our mutual consent. Now, the revenue share for the franchisee partner for individual counseling services is the 20% revenue share for the franchisee. If you look at my psychological certificate courses, so 75% of the revenue share goes to the certificate programs. And for psychometric testing, 20% is the revenue share. Yeah, so sorry, this is the other way around. This is the revenue share to the feeling minds. So whatever the revenue you generate from individual counseling services, you retain 80% of that and 20% you share with feeling minds. In similarly, because psychological certificate courses, because these courses are offered by Dr. Chinu and her team, so they conduct these diploma and certification programs. So entire program delivery will be done by Feeling Minds. So they take care of your curriculum program, how to deliver it. So everything will be managed by Feeling Mind teams. Here, the franchisee, my partner, gets basically 25% commission on the course fee. Right. And then for psychometric testing, assessments that we conduct, so franchisee will retain 80% of that revenue and 20% will be shared with Feeling Minds. Right. Now we'll have a slightly more in detail look at the business model. So if you look at my investment that we have calculated 20 lakh rupees and 26 lakh rupees. So we have the detailed bifurcation. So your setup cost is 6.4 lakh rupees. Internal branding and signage cost is 3 lakh rupees. Equipment cost is 4 lakh rupees. 20,000 rupees towards your initial licenses that we require. 50,000 provision towards your business promotions. And 2 lakh rupees is for the trainer programs. So the staff that you are going to hire, Feeling Mind team is going to conduct training and train them. And then for franchisee fee is 3 lakh rupees and 90,000 rupees is the GST amount on franchisee fee. Even franchisee partners, they will basically claim the benefit of the GST. But the total investment is 20 lakh rupees for psychology clinic and 26 lakh rupees for my wellness center. Apart from this, the property deposit is going to be at actuals, but we have calculated based on a 120 rupees per square feet rent, right? So, but this will vary. Like if you talk about Bangalore, you may have to pay like 9 months rental. If you are in Delhi NCR, you need to pay like 3-month rentals. In some conditions, some places you need to pay 6 months deposit. But if you have your own property at a good location, you can start this business at your own premises, right? So there basically you don't need to share any rental
to the property owners. You don't need to pay any property deposit. So it adds basically a better revenue stream for your own property, because you are going to get consistent rental income for your property for the next 5 years, right? And for property owners, it's a lucrative business, because if consider your property in 5 years, if it is vacated like 2-3 times, each time it requires renovation, so that is the cost to the property owners. Second thing, each time you need to pay a commission uh, to the brokers to basically, you know, to rent out your property, right? And suppose your property is vacated for like 4-5 months, that means it's the direct loss for the property owners, right? So it's a very attractive opportunity for the people who have their own property. And this is not necessary that you should have a like commercial location. This business can be set up even in the residential locations as well. Plus, my franchisee should have a financial bandwidth basically for working capital around 5-6 lakh rupees. He should carry that bandwidth. Right. Now, let's have a look at the HR structure, the kind of staff that you require. So you require around 9 people to run this business. So you require basically psychology MPhil graduates, you require MA graduates in psychology, then you require interns, admin staff you require 1, then you require basically business development and marketing person, plus support staff that you needed, and 1 cleaner. So your total salaries per month is around 1.8 lakh rupees, right? And that translates to 21 lakh rupees for the year, right? Now, if you look at my revenue streams, ultimately we have the like 3 revenue streams. One is your individual counseling. So we have considered like number of consultations every month on the per day basis, right? So we are doing 60 consultations in first month. So only 2 consultations per day. So that is very low, very conservative. And then we have considered like 10% growth rate in our consultations. So our consultations starts like 60 consultations in a month and goes up to 173 at the year end. So in total, in the whole year, we are looking at around 1,200 or 1,300 consultations in a year. And that gives you a revenue of 31 lakh rupees. And out of this 31 lakh, basically 7 lakh rupees goes to the 7 to 8 lakh rupees goes to the Feeling Minds. Now for psychology certificate courses, yes, my franchisee is going to enroll the students. Okay. So we have considered only like 2 students, 3 students, 4, 5 students in a month you are going to enroll in our professional and non-professional programs. And the fee for professional program is 3 lakh rupees. And out of this 3 lakh rupees, my franchisee gets 20%, 25% of this. For non-professional courses, so 10,000 rupees is the fee. And so total revenue is that my franchisee gets here. Okay. My third revenue stream is my psychometric testing. So that's, again, we are considering basically the 75% of our consultations that we are seeing here. Only 75% will have a psychometric testing. So around 1,000 customers, or you can say patients, are going for psychometric testings, and that is the third revenue streams, right? Now, if you look at my psychology clinic P&L statement, the total revenues are 1.2 crores. Second year is 1.5 crore and goes up to over 2 crores in 5th year. If you look at my revenue share to the Feeling Minds is 42 lakh rupees. And against this 42 lakh rupees, your counseling services, your testing services, your treatment services, your therapy services, everything is managed by Feeling Minds. So the franchisee partner, he does not have to develop the capability to deliver these services, right?
And then basically 10% your annual revenue goes for your continuous training and development of your teams. So out of this 1.2 crores, around 42 lakh rupees goes to the brand in terms of revenue share. 10% goes into the training and development. 5% we have considered for local marketing, and this is slightly higher side. My franchisee can optimize these costs if they do very effective marketing. Digital marketing provision we again capped at 5% of the revenue. Your rental cost is close to 1 lakh rupees, so that's translates to 12 lakh rupees for the year. HR costs around 21 lakh rupees, and plus 5% we kept basically the staff benefit. Cost of consumables in terms of delivering these services at your psychology clinic is around 5%. Software charges, so because first year charges we have already considered in our initial capex cost, so it will incur second year onward, that is the 20,000 rupees for the year. Electricity, water and utility expenses around 30,000 rupees per month, so that's your 3.6 lakh rupees. Telephone and internet expense around 3,000 rupees per month, that's translate to 36,000 rupees, and other miscellaneous expenses we kept at 2% of the revenue. So my total expense for the year is 1.18 crore, right? So the first year, if you look at my effort, my franchisee profits are low. But second year, my franchisee makes a profit of 16 lakh rupees. And then going forward, you make like more than 20 lakh rupees every year. So my franchisee earning, if you look at the per month basis, are going to be on an average of more than 1.5 lakh rupees, right? Considering very conservative revenue streams in this business model, my franchisee can do much more better sales in this business segment. And that's a very attractive business value proposition. So around 2 years is the break even time, and franchisee makes almost 5x of his investment. That means franchisee is investing 20 lakh rupees and franchisee will make 1 CR in 5 years. Now let's have a look at the wellness center. So my wellness center revenues are around close to 1.5 crore and goes up to 2.6 crore in year 5. Revenue share is the same as we have in the psychology clinic format. The local marketing cost and digital marketing cost we have considered at 5%. Yes, wellness center is going to have a larger space, so the rental is going to be slightly high. HR expense, again, is going to be the same as you have in the psychology clinic. The staff benefit cost at 5%, and other costs we have considered almost the same. Yes, electricity and utility expense is going to be slightly high in wellness center. So after 1.46 crore is your revenue, and your expense for the center is 1.38 crores. So your first year profit is close to 8 lakh rupees, and second year is 24 lakh rupees and goes up to 42 lakh rupees. If you look at on an average earning for the franchisee partner for the next 5 years, franchisee can withdraw a monthly profit of like 2.4 lakh rupees every month. So that's the average we are talking about. And if you look at the cumulative returns for the franchisee is more than 5x. So that means franchisee invests 26 lakh rupees and he withdraws a net profit of close to 1.4 crores or 1.5 crores. Right? And break even for franchisee partners 21 months. Okay. So with this, I will end the presentation, and Neha, over to you for questions. Thank you so much, Ashok sir. Thanks a lot. I would want to start taking up the questions from the Q&A box. Guys, if you have any query, you can leave into the Q&A box as we are starting to take up the questions. There is one question being asked by Mr. Akash. Apart from the 2 type of centers, is there a backward integration into psychiatric center with doctors? Yes, ideally, if you are running the mental health clinic, we would like you to have a psychiatrist visiting the clinic at least once a week so that you can refer
the clients who need medical treatment to them for medicine in-house. We don't prefer to send our patients outside because the way the game is played by medical doctors is that they never return back to psychotherapy, which is what they might be needing. So we suggest that, have a psychiatrist visiting you. Okay. There is one more question which I would like to take up is what is the venue for certificate training program? Is it arranged by the brand? It is arranged by the brand. Most offline trainings, you will have to come to Agra, which is our headquarters for training. And some of them are also arranged online. Okay, so that means the brand is arranging all the training programs. Kash has had one more question. What is the experience profile of MPhil and MA Psych counselors? Rupees 3,000 pricing is on higher side and would need experienced counselors. So rupees 3,000 is our basic price for people who are needing emotional counseling, but we also have higher prices for couple counseling, family counseling, and also a higher price for career guidance and counseling. These prices may seem to be higher at the first glance, but they are actually a lot of value-driven prices because what we are giving is exceptional to what other people are giving in the market. One. Two, yes, we will need experienced people. One, we will need MPhil people with at least 2 years of experience and MA psychology people with at least 3 years of experience. And the other part, the training and supervision will be taken care by Feeling Minds so that they are able to provide the services which is at par with Feeling Minds brand. All right. So there is a question being asked by Rahul. I'm not sure if Ashok ji, you are going to explain it. He's asking about the revenue and he's asking how do one generate the same? If you can just put a little more light over the fees and salaries. There's one more question by Yeah. Akash. I would like to take up Neha before we go to Rahul. Sure. He's Sure. asking about CBT. Yes, CBT is one of the evidence-based therapies that we provide in Feeling Mind centers, both the clinic and the wellness center. Our therapeutic approaches vastly borrows from CBT, from REBT, and third wave therapies like acceptance commitment therapy, motivational interviewing, dialectical behavior therapy. All are evidence and research-based treatments. And we also utilize the same therapeutic approaches and derive their principles for emotional education. Thank you. Okay. Yes, Neha. So in terms of revenue, how we drive the revenue, I think in the financial model, I've already explained how we are going to generate revenues. So you are going to have 3 revenue streams. One, revenue you generate from individual counselings, where this is just only the consultation, and the consultation fee is 3,000 rupees. So in a month, if you consult 100 patients, you make 3 lakh rupees. And from that 3 lakh rupees, there is a revenue share that goes to the Feeling Minds, and there's a revenue share that goes to the franchisee. Okay. Second is my psychological certificate courses that Feeling Mind offers. So these are the 2 kind of programs. One is your professional programs and non-professional programs for individuals, right? So you enroll students in these programs. So professional program fee is 3 lakh rupees. And on that 3 lakh rupees, you got a 25% commission. Similarly, for non-professional program fee is 20,000 rupees and you got a 25% cut on that. So that's the second revenue stream, right? Third is my psychometric testing assessments, right? On the psychometric testing assessment, average cost is 5,000 rupees. And on that 5,000 rupees, you get 80% of the revenue share. Okay. So these are like your consultations, and psychometric testing is being done at your psychology clinic, and you get basically 80% of the revenue share. The rest of the services are provided by Feeling Minds, where basically they take more revenue share in terms of program offering, therapies offerings, and other treatment offerings.
Okay, I think very well explained, Ashokji. And also, guys, you can reach out to us. You can connect with us on our hotline number if you want a detailed discussion. And our team is going to connect with you within today and tomorrow. So, thank you so much. Before we conclude this, any last message you want to convey to the participants and the partners who are watching you live, Doctor? There are a couple of more questions, Neha. Can we take them? We can speak on one-to-one as we are Okay. exceeding the time, so we'll have to connect with the participants one-to-one, and we'll connect them with you post the one round of discussion. So the team is going to reach out to them, and we will be taking up all the questions Sure. post this Thank you webinar so now. much. And my last message to all of you is welcome to this field which needs you. Join hands with us to do genuine, authentic, sincere work in this field without fooling people, without taking advantage of their distress, contributing and not only earning, generating revenue, but also generating a lot of goodwill. Thank you so much. Thank you, and it was lovely hosting you and knowing so much about your brand. You're really doing a wonderful work, and it's a great opportunity for all of you. And you did mention initially that we really have very less people who are into the similar kind of work. So we do have a great scope in terms of business also. So it's a great opportunity for the people who are watching you live here. And guys, I'm sure the brand details which we have shared with you related to feeling minds have given you an understanding. But as I did mention that we are going to connect with you for one-to-one discussion, and we are going to take it forward and connect you with the brand again. So thank you so much for joining us. Thank you, Dr. Chinu. Thank you, Neha. Thank you, Amisha, for being here. Thanks a lot. So, guys, as you know that every day we are going and we are sharing a new business opportunity for all of you. So again, tomorrow we are coming up with a new business opportunity with Beatnik. They are into fashion. They are India's premier women's fashion wear brand, and with exciting growth potential. They are providing you a great ROI. To know more about the brand, as the investment starting with 12 lakh rupees only. So to explore this business opportunity, please join us tomorrow. I have shared the registration link into the chat window. Just click on that link and get yourself registered in advance and join us tomorrow at sharp 12 p.m. Thank you so much, everybody. I hope that you will have a wonderful day ahead. Thank you. Thank you.